नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया के इस लाइव स्ट्रीमिंग में। मैं हूं योगेश शांता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा। आज हम इसलिए आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि आज बात होगी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, जिसे कांग्रेस नाम दे रही है न्याय पत्र का, और इसी पर हम बातचीत करेंगे कि क्या कांग्रेस की जो गारंटीज है और मोदी की गारंटीज है वो आपस में कहां बैठती हैं और कौन किस पर भारी पड़ सकती है, इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ सुजाता पॉल जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ बादशाह सेन साहब हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम सुजाता जी से करना चाहेंगे। सुजाता जी, 5 न्याय की बात कांग्रेस ने की है और उसके अंदर 25 गारंटीज एक तरह से देश के सामने पेश की है, लेकिन जिस तरह से दूसरी तरफ चीजें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की गारंटी जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या विजन है इन 5 न्याय और 25 गारंटी को आगे ले जाने का कांग्रेस के पास। सबसे बड़ी बात है कि जिन बातों को जुमला करार दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अब उसका नाम गारंटी कर रही है, क्योंकि कर्नाटका में उन्होंने हमारी गारंटीज का असर देखा। लेकिन अगर मैं कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र की बात करूं तो ये न्याय का संकल्प है, और ये न्याय का संकल्प इसलिए है क्योंकि हम अपने संविधान में विश्वास करते हैं। इस देश के डीएनए में जो जो बातें हैं वो हमारे संविधान में है। आज हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, हम बात कर रहे हैं नारी न्याय की, हम बात कर रहे हैं युवाओं की, हम बात कर रहे हैं इस देश में काम करने वाले वो तमाम श्रमिकों की, हमारे देश के जो किसान हैं उनके बारे में, और बात कर रहे हैं हिस्सेदारी की। तो केवल ये 5 न्याय और 25 गारंटी नहीं, अगर आप हमारे न्याय पत्र को देखेंगे, जो न्याय का संकल्प है वो 2024 में बेहद आवश्यक है। उसमें आप देखेंगे कि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो या संवैधानिक न्याय की बात हो या पर्यावरण की बात हो, इन सबको इसमें जोड़ा है ताकि लोगों की समस्याओं का हल हो सके। जैसे मैं आखिरी बात कह रही हूँ, सफाई कर्मियों से मिलती हूँ, और शायद ये छोटी सी बात लगती होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन जो बड़े बड़े सपने उन्होंने दिखाए थे आज वो त्रस्त है। और ना केवल किसान और श्रमिक जगह जगह आपको दिखते हैं, मगर हमारे सफाई कर्मचारी जगह जगह आंदोलनरत रहते हैं। उनके लिए भी हमने इसमें बातें लिखी हैं जैसा वो चाहते हैं। तो ये लोगों का जो डिमांड लोगों की रही है, हम उसके ऊपर चलते हुए आज न्याय की बात कर रहे हैं। जी, Suresh Kochitil is also there with us. Kochitil sir, thank you so much for taking time out. You heard Congress spokesperson Sujata ji speak on the salient features, I would say, of the Nyay Patra that has come into picture. How do you respond to it, first of all? Secondly, Congress has tried to work on the weaknesses, the weak points that BJP has been found wanting on. Do you see this hitting the BJP where it hurts the most? Well, I think when you're not going to win an election, you can promise anything. Actually, I tweeted some time back that how come Congress didn't promise 1 kg of gold for every family? Because when you're not winning an election, you can promise anything under the sun. Looking at pure numerical possibilities, we all know what is happening right now. And 190 seats. There is a direct fight between BJP and Congress over the last 3 elections, 2014, 2019, and even before that in 2009. And of the 190 seats, BJP has always won 170 to 175 seats, because there is no third party in that. There is no India alliance that to speak of. So that itself shows where Congress is losing. Last time Congress won 55, 19 came from Kerala. Imagine. And today Congress says BJP is not there in the south. BJP has got more MPs than Congress from south of India, I would say. So, लेकिन सुरेश जी, जो आपने शुरुआत की जिस बात से कि इलेक्शन जीतेंगे नहीं तो कुछ भी बातें कही जा सकती है, लेकिन कांग्रेस ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें अपना न्याय पत्र उन्होंने, जिसे वो कह रही है घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी बात की थी। और सुजाता जी ने भी अभी इशारा किया कि जुमले तो बीजेपी ने भी बहुत दिए हैं, नौकरियों की भी बात की थी, तो वादे तो आपने भी पूरे नहीं किए हैं। So, नौकरियों की बात लेते हैं, नौकरी की बात ले लेते हैं। नौकरी मीन्स क्या? गवर्नमेंट जॉब, या नौकरी मीन्स नौकरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि मैं इसमें पूरा डिटेल से एनालाइज कर चुका हूं और मैं और एक डिबेट के लिए बैठने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ मुद्रा लोन ले लीजिए। मेरे हैदराबाद सिटी में मैंने बहुत सारे, शायद 2000 से ज्यादा महिलाओं से मिला हूं जिन्होंने मुद्रा लोन लिया है। इनके पास एक स्विंग मशीन था, अब उनके पास 5 से 10 स्विंग मशीन है। छोटा सा टेलरिंग शॉप चलाते हैं। कितने लोगों की नौकरी लग गई? और ऐसे आप मुद्रा लोन, टोटल नंबर ऑफ मुद्रा लोन्स देखिए कंट्री में जितना हुआ उसके है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि राहुल गांधी को पकौड़े बनाने वाले का बिजनेस अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे घर के बगल में जो पानीपुरी वाला है वो मेरे से ज्यादा कमाता है और इनकम टैक्स भी नहीं देता है वो। लेकिन हम उस बात पे नहीं आएंगे अभी, क्योंकि हमको पता है ये लोग कहते हैं कि हमारे गारंटी से हमने कर्नाटका जीता। राजस्थान क्या हुआ? मध्य प्रदेश क्या हुआ? छत्तीसगढ़ क्या हुआ? आपने तो वहां भी यही न्याय का पूरा प्रस्ताव रखा था ना, क्या हुआ? अब देखिए यही तो बात है ना, आप प्रॉमिस तो कुछ भी कर सकते हैं, बट व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू विन एन इलेक्शन। सोचिए मोदी जी जो 70 साल के हैं, 26 से 28 रैली एड्रेस कर चुके हैं लास्ट 7 दिन में। राहुल गांधी एक रैली निकाला, राहुल गांधी वायनाड में, बिना कांग्रेस के झंडे का। आपको पता है उसका अलग कहानी है। चलिए उस पर दोबारा आएंगे। वो जाहिर तौर पर उस मैनेजमेंट में बीजेपी का मुकाबले में अभी कोई खड़ा नहीं है और मुश्किल है। हमारे साथ बादशाह सेन साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सेन साहब, आज जिस तरह से कांग्रेस ने जो जारी किया है घोषणा पत्र, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, then only those parties who are winning elections should have manifestos. In other words, before in the 20th, the BJP should not have had a manifesto in the past, and now the Congress should not require a manifesto because they are not going to win. The point remains is manifestos are a part of a given in the election process, like party symbols and all sorts of things. The point, and it is curious that hardly ever do the provisions of the manifesto get implemented, whether it's from the Congress or it's from the BJP or any other party. Right. For instance, the BJP earlier had said they would create 10 million jobs a year. If that is true, in the last 10 years, they should have created 10 into 10. They would have created 100 million jobs. In which case, why do 80 crore, that is 800 million people, have to be fed for free? I mean, according to the signboards I have seen all over the country, the BJP is proudly and perhaps nicely saying that they are feeding 800 million people. Now, if a person has jobs, why does he need free food? I think that if you offer a person a job, then you don't need to give him free food. I mean, I don't think anyone in this discussion would prefer free food to a job. So the point is, manifestos are written, whether are published by political parties, whether in the opposition or in the ruling benches, and these are nice things. Like, to some extent, they're a statement of intent that it's okay. BJP says 10 million jobs. Maybe they will not be able to give. They will look for 10 million jobs. Maybe they will give 5 million jobs. I can understand, and manifestos are meant to be like that. They're meant to provide a thrust. They're meant to tell the people which direction the party intends to go. Now, from what I can see, in a very vague fashion, in India, there are two basic approaches to life. There is the trickle-down effect, which is where the BJP is pushing for reforms and for progress and development from the top down, and the Congress and others are saying that no, we will do it from the bottom up. These are the two. These are, broadly speaking, the two visions of life. Now, the point is, the people have to choose between one and the other. If they choose the top down, they will choose for the BJP. If they choose the bottom up, they will choose for the Congress in India or whatever alliance. That's right. Yeah, Mr. Singh, talking about the statistical approach, obviously both the biggest parties of the country, be it Congress or the BJP, have had very distinct approach towards it. But Sujata Paul ji, जब बात आती है कांग्रेस के आज के मैनिफेस्टो की, न्याय पत्र की, मैं देख सकता हूं गिनती करो कैंपेन, जहां वो एक बार फिर से कास्ट सेंसस की बात की है, एमएसपी उन्होंने फिर से एक बार कहा है, इंश्योर किया है कि लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे वो,
ऐसे कुछ मुद्दे जो पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहे, they weren't making headlines. Plus, we also saw the Rahul Gandhi's yatra was also termed as Bharat Nyaya, Jodo Nyaya Yatra. So, kahin na kahin, do you believe that what started in the September, October of 2022 is going to get you fruits? Bharat Jodo Yatra से, Bharat Jodo Nyaya Yatra से आपको लगता है कि फायदा या बेनिफिट मिलने वाला है 2024 में? मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं कि मैं हैदराबाद में जनवरी के महीने से हूं और मैंने जो यहाँ पर लोगों की इच्छाओं को देखा है और जिस तरह से हमारी गारंटीज इंप्लीमेंट हो रही है ना, मुझे हैरानी होती है जब भारतीय जनता पार्टी अपना अहंकार दिखाती है, क्योंकि हम सब जनता के सामने झुकने के लिए जाते हैं एंड ऑल दैट वी नीड टू डू इज give the best to our people, give governance to people. And today we have seen that in Telangana only, the previous BRS government indulged in phone tapping, and that phone tapping has serious links to the center because the entire equipment which was brought from Israel worth 300 crore rupees. And I would like to know from the BJP spokesperson, didn't Amit Shah know about it? And when it was brought in to gather Naxalite information, how was it being used to acquire information of political rivals and even their own people? So the fact is, when we are in government, we should be working for people, and the implementation of guarantees can be seen very well in the state of Telangana, which we have won in December. बट नाउ कमिंग टू जो हमारी आप बात कर रहे हैं कि हमने जो बातें कही हैं वो हमने जनता की जरूरतों को देखकर कही है। हम जब नौकरियों की बात करते तो हवा में बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको हम 14 लाख और आंगनबाड़ी बहनें बनाएंगे। मतलब ये तो फिर कहेंगे कि जो इंजीनियर बन गया वो पकौड़े बेच ले। भाई पकौड़े बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पकौड़े बेचता है उससे पूछिए कि वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, उसकी हालत को और बेहतर बनाना चाहता है या 5 किलो राशन में समेट के रख देना चाहता है। तो when we are talking about our country, we are a country of young people. तो उनके जो एस्पिरेशंस है उनको ध्यान में रखते हुए हमें उनको वो चीजें देने की जरूरत है जो उन्हें चाहिए। और ये अगर पहले ही कोई कह दे कि कोई हार रहा है तो आप भूलिए मत कि 2003 में किस तरीके से कहा गया था कि इंडिया इज शाइनिंग, और उसके बाद क्या हुआ। आज मोदी जी को जिस तरह से दूसरी पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल बल्कि दुरुपयोग करके इस्तेमाल करके दूसरे पार्टी के लोगों को लाना पड़ रहा, पैसा भी लाना पड़ रहा भाई, पैसा, क्योंकि पैसे का सारा खेल है। मगर गुजरात के 1.5 लोग जो आए हैं अब गुजरात ही भेजे जाएंगे जनता के द्वारा। ये भारत की जनता है, भारत माता की संतान है। जी चलिए सुरेश जी, बहुत सारे पॉइंट। जस्ट लास्ट वीक गए से हफ्ते ने रेवंत रेड्डी ने कहा था, इनके जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कि मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं और हम गुजरात के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चाहते हैं। तो फिर पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में कि आपने जो बोला उस पर अड़े, कहता यस हम गुजरात के मॉडल पे जाएंगे। राहुल गांधी ने मुंह तक नहीं खोला। देखिए रेवंत रेड्डी का जो पावर एबीवीपी का बंदा है, ठीक है, एबीवीपी का बंदा है, कोई डाउट नहीं है उसमें, ही हैज नॉट डिनाइड इट। बट रिमेंबर द वन थिंग, मैं फिर वही बात पूछना चाह रहा हूं कि ये लोग कहते हैं कि हमने इतने करोड़ जॉब्स देंगे। आपने इस देश को तकरीबन 65 years you have ruled this country, what did you do? अब तक क्यों नहीं किया आपने? आपको 10 साल में सुरेश जी, आप बीजेपी इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि 10 साल में सारी समस्या खत्म हो गई है। हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि घोषणा पत्र पर चर्चा के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपए दिहाड़ी दी जानी चाहिए, वेज दी जानी चाहिए, मिनिमम वेज, क्या वो गलत है? क्या अगर केंद्र सरकार की नौकरियां की बात करती है क्या वो गलत है? और डाटा आपका ही बताता है कि आप लोगों ने सरकारी नौकरियां कितनी दी और 45 साल में बेरोजगारी किस दर पर पहुंची, वो भी डाटा बताता है। वो मेरा नहीं है, आपका नहीं है। अच्छा। तो आपका डाटा मुद्रा लोन नहीं बताता? आपका डाटा मुद्रा लोन भी बताता है डाटा।
क्यों नहीं उसके बताते भी फिर? पूरे कितना बताइए मुद्रा वो लोन दिए डेटा गए भी थे वो बताता बताइए, ये कहते हैं कि जो अगर कितना वो मुद्रा ये लोन जो दिए थे बातें वो बताइए आगे। जो मुद्रा बातें लोन कांग्रेस ने उठाई है, नहीं, क्या आप ये बताइए आपको ना, गलत लगती है सारी ईपीएफ बातें? अकाउंट्स कितने ईपीएफ अकाउंट्स आए थे बताइए, ईपीएफ में न्यू मेंबर्स कितने ऐड हुए थे बताइए। और उसके बाद अगर नौकरी मेरे चलेगी पास आदमी पूरा की, स्टैटिस्टिक्स है, मैं नौकरी चैलेंज चलेगी करता हूँ आदमी आपको, की 1 साल बाद, चैलेंज करता हूँ। ईपीएफओ सुरेश जी, ईपीएफओ में हम भी काम करते हैं, ईपीएफओ अकाउंट खुलता है नौकरी के साथ, 1 साल बाद नौकरी चलेगी तो क्या होगा यही उसका? तो मैं कह रहा हूँ, आपका डेफिनेशन ऑफ जो नौकरी है ना, वो बिल्कुल नहीं, नैरो नौकरी माइंडेड की है। डेफिनेशन ये, एक मिनट, नौकरी की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि आप कह रहे हैं कि मुद्रा लोन में रोजगार मिल गया, मैंने नौकरी ले ली, मुझे लोन के जरिए मैंने एक दुकान खोल ली, ठीक है, उस दुकान में जो दूसरे लोग हैं, मेरे पत्नी है या मेरा भाई है छोटा, जो बिना वेज के वहां पर काम कर रहा, आप उनको भी नौकरी में गिन रहे हो? सारे तो वो नहीं होते ना, एक लेथ मशीन चलाते हैं तो लेथ मशीन आपकी बीवी चला सकती है। हैदराबाद में आइए, वो नहीं हो सकते, लेकिन जो फिरोजपुरा डाटा एरिया में डाटा जाइए, उसने पहले हैदराबाद में दिया था 100 उसमें लेथ जो मशीन है जिन जो लोगों मुद्रा को लोन में दिया सैलरी गया नहीं था। मिलती है वो एक मैं डाटा बहुत आपको ज्यादा कह रहा था। हूँ, अब डाटा मैं की आपको कह रहा मैनिपुलेशन हूँ की कि बात कर आप रहे हैं। जब नौकरी चलिए की बात करते हैं, वापस सिर्फ सुरेश मोदी जी जी इस के पर टाइम आए, पे याद आते हैं, सुरेश कांग्रेस जी को नहीं पूछते कि आपने इस कितना इस नौकरी पर दिया। वापस आए हम कि जो बातें कांग्रेस ने अगर अपने मैनिफेस्टो में की, जीत हर बात की बात है, क्या उन बातों को आप कितना फिजिबल या कितना ठीक मैं कोई मानते हैं सीरियस या लेता ही नहीं नहीं, कोई मानते? नहीं ले रहा सीरियसली। कांग्रेस सोचिए, कांग्रेस के ऑफिस में, एआईसीसी ऑफिस में लाइट और फैन बंद करने के लिए कोई नहीं बचेगा। संजय निरुपम भी निकल गया, सब निकल गए वहां से, एक के बाद वो एक पूछ ही नहीं निकल रहा हूँ आपसे, चलिए वो पूछ ही नहीं रहा हूँ। इन्होंने जो घोषणा पत्र में बातें की हैं उससे आपकी कोई सहमति है? उसको कोई सीरियस लेने का जरूरत भी नहीं है। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो लीजिए 2019 का, उसमें देखिए बीजेपी ने कितने आइटम्स टिक ऑफ किए हैं, कितने आइटम्स टिक ऑफ किए हैं। वो बात है, आप फ्री प्रॉमिस करने में नहीं है इलेक्शन जीतना। फ्री 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 क्या हुआ? फ्री करते करते राजस्थान गुजर गया, छत्तीसगढ़ निकल गए हाथ से। इससे बड़े प्रॉमिस किए थे ना वहां। मध्य प्रदेश क्या हुआ? लोगों को मालूम है कि ये फ्री वाला चीज चलता नहीं है। लोगों का आप फ्री जो है राशन बांटना बंद कीजिए, लोगों को फ्री राशन बांटना बंद कीजिए 80 करोड़ों को, जो सवाल इनने उठाया था अगर फ्री वाली बात है। खैर वो आपके पास वापस आएंगे, सेंस आपको ले लेते हैं। Since we have seen increasingly both the Congress and the BJP and Aam Aadmi Party too, although there is no representative of that party as of now in the panel, but as far as the freebies are concerned, in different manners have been doled out to people time and again. This is something new that we have seen, although or maybe at a projected level. How do you see this, the freebie politics, and again the fight on it? How do you see this, good or bad, for the people of the country? Well, actually speaking, I don't think I'm not very clear about the global picture, but there's virtually no country in the world which doesn't have freebies. For instance, in the UK, you have free healthcare. We don't have it here. All right. You have unemployment benefits. All right. These are all freebies. But these are meant to be, and I'm talking not about India, I'm talking about abroad, whether it's in France or in states also, sir. We have to keep that in mind. Yes, exactly. I agree with you. So I think that basically there is nothing wrong. There's nothing wrong in giving freebies. Whether the BJP is giving free food, I don't think there's anything wrong. None of us as Indians want to see a fellow Indian starve to death. So if the BJP is giving the fellow Indian some food, it's good for the BJP. It's good for people. So I'm not against freebies. It's actually, I would wonder why the BJP is against freebies, although they're doing this. They're doing a good job, maybe giving free food here and there. Nothing wrong in that. And I don't think freebies by itself is wrong. But what I'm trying to say is that if you're inculcating a culture in a country which only depends on freebies, if I am horrified that after so many years, 80 crore Indians, 800 million Indians are having to depend on free food, that means a failure not just of the BJP in the last 10 years, but also of the Congress who said they would abolish poverty, garibi hatao. 1970s we are hatawing garibi, we've got 800 million people still eating free food. I think that is where the politicians of this country, frankly speaking, whether it's the BJP or the Congress, has to sit down and take this seriously. I don't think they take their own manifestos seriously. All these parties, they produce a manifesto because I think it's part of the election process. The election commission will pull you up if you don't have a manifesto, but then they don't seem to follow through with it. And no need to publish a manifesto. Election commission doesn't say you have to publish a manifesto. I'm saying that I'm just
I was being facetious, Mr. Suresh. I was being facetious. I'm saying it is part of an election process, like so many other things. People know what Manifestos, you are. and I'm looking at it this way because nobody seems to actually, no party seems to take their manifesto seriously. Otherwise, under the Congress rule, Garibi should have gone. And under the BJP rule, also telling yes, this seems to be a very utopian, sort of setup then that we expect कि हाँ भाई manifesto भी हो और वो पूरा भी हो जाए. But BJP, before we come to Mr. Kochitil, has, in the last 10 years, at least I would say the bigger, if you talk about Article 370, if you talk about Ram Mandir, ये दो ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन्होंने उन्होंने सोसाइटल उसके तौर पर किया. सुरेश साहब, आपके पास हम जरूर आएंगे, बट नंबर अभी टर्न अभी सुजाता पॉल जी का है. सुजाता जी, आई मीन, जो भी बातचीत हुई, बीजेपी जिस तरह से इसको काउंटर भी करती है मैनिफेस्टोस को या प्रॉमिसेस को, आपको क्या लगता है कि एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस जो भी इस बार इंडिया अलायंस के साथ आ रही है, कहीं ना कहीं आगे इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति तो नहीं है? कि हमने जब भी कोalition पॉलिटिक्स को देखा है, कभी ना कभी कोई पुल करता था. एमएसपी की बात होती है, एक राज्य कहीं दूसरे राज्य से ना टक्कर ले, या फिर अन्य मुद्दों पर आपको लगता है कि इसमें सारे पार्टी सहमत होंगे? एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें सुजाता जी, ओपीएस का जिक्र आप लोगों ने नहीं किया, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल, बाकी राज्य में आप लोगों ने, उत्तराखंड, जब भी इलेक्शन हुए आप लोगों ने कहा हम रिस्टोर करेंगे, और उसकी बात भी हुई कि हिमाचल में भी हम रिस्टोर कर रहे हैं, या हम दूसरे राज्य में भी जहां सरकार है वहां पर रिस्टोर करेंगे इस चीज को, लेकिन मैनिफेस्टो से गायब कर दिया. मैं इन दोनों मुद्दों पे बात करती हूँ, लेकिन इसके पहले ये बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे बच्चे तो विदेशों में जाएंगे पढ़ने के लिए, मगर जो आम जनता है उसके सपनों को हम टूटने देंगे, वही उनका संकल्प ही ये है. और मैं ये बता रही हूँ आपको कि हमारे जो मैनिफेस्टो में हम कहा गया है उसमें ये जिस तरह से फ्रीबी की बात कर रहे हैं ना, कि ये देंगे तो सब वाह हो जाएगा और दूसरा कोई करेगा तो वो रेवड़ी हो जाती है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं. मगर प्रधानमंत्री जी का बड़ा दोहरा चरित्र है, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सरकारी वैकेंसीज है, क्या उनमें नियुक्ति नहीं हो जानी चाहिए थी? आज मैं उत्तराखंड से आती हूँ और उत्तराखंड में धरना स्थल हैं, और हर धरना स्थल पर बच्चे जो हैं वो बैठकर आंदोलनरत हैं. जानते हैं क्यों? क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम इन्हें 100 दिन की नौकरी करने के बाद पक्की नौकरी देंगे. वो बैठे हुए हैं उसी सपने को देखते हुए कि शायद भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, पूरा हो जाएगा. और यहाँ पे पेपर लीक के कारण जो हमारे युवा सड़कों पे आए थे, हमारे उन युवाओं में से 13 ऐसे युवा थे जिनके ऊपर 307 का मुकदमा करके उन्हें अंदर कर दिया गया था. इतना विरोध हुआ, इतने युवा सड़कों पे आ गए कि आखिर में सरकार को पीछे हटना पड़ा, और उन बच्चों को भी बेल भी मिली, और आज उनमें से एक युवा जो है वो चुनाव लड़ रहा है इंडिपेंडेंट. शायद वो किसी लोकल पार्टी ने उसको टिकट भी दिया. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है सीनियर सिटीजन्स के लिए, विडोज के लिए, पेंशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, उनके जो 1000 रुपए उसको हम डबल करेंगे हर महीने का, तो उसमें क्या कोई गलत है? महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या ये फ्रीबी कहलाएगा? हम तो एक कल्याणकारी राज्य हैं. अगर हम कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे 10,000 रुपए प्रति माह का, तो क्या इसको भी ऐसा ही माना जाएगा? क्या अगर हम कहते हैं कि अग्निवीर योजना को समाप्त करके हम ओरिजिनल स्कीम को रखेंगे, ओरिजिनल रिक्रूटमेंट का, तो क्या हम अपने बच्चों को सशक्त और अपने देश को सशक्त नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, क्या उनको वो अधिकार नहीं है? जो लोग इसको बना रहे हैं ना, जो आज फौज में है, जो इस अग्निवीर योजना को आने दे रहे हैं, उनको मुझे बताइए कि वो तो अपनी पूरी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो युवाओं को कह रहे हैं आपको 4 साल के लिए नौकरी करनी है. 4 साल में 1.5 साल आप ट्रेनिंग करिए, उसके बाद जाइए, और अगर आप शहीद हो जाते हैं तो शहीद का दर्जा भी आपको प्राप्त नहीं, आपको ग्रेचुइटी भी नहीं मिलती. और मेरे उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये हो रहा है आज. शायद इनको पता नहीं है. देखिए, इनको पता नहीं है तो बीच में मत बोलिए. आपके बीच में मैंने नहीं बोला. इनको ये नहीं पता, बीच में मत बोलिए आप. मैंने आपके बीच में एक बात भी नहीं बोला. बिल्कुल नहीं. मैं उत्तराखंड से आती है, मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है. तो देखिए, जब इनको पता नहीं, देखिए ये झूठ, यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कि ये झूठ बोलेंगे. जब हम बात बीजेपी जाए प्लीज,
सुरेश जी, Please get this right. I am not a BJP person. इसको आर्मी ने क्लैरिफाई किया। आप बीच में मत बताइए मुझे, क्योंकि उत्तराखंड का एक युवा अभी जो अग्निवीर था वो शहीद हुआ, उसे तिरंगे में नहीं लिपटाया गया। क्यों? उसको ग्रेजुएटी नहीं मिली, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, उसके परिवार को कोई जो फायदे होते हैं सेना देती है वो नहीं मिल रहा है। नो बेनिफिट्स हैव बीन गिवन टू हिज फैमिली, हिज ओल्ड पेरेंट्स। सो प्लीज डोंट टेल मी दीस लाइज। पहली ओपीएस पे भी आ रही हो। नो, यू प्लीज गेट दिस पर्सन टू कीप क्वाइट। आई डोंट स्पीक इन बिटवीन एनीबॉडी। व्हाई इज ही स्पीकिंग इन बिटवीन? Why is he speaking in between? I challenge you. Come on, June. I am telling you because you come to Uttarakhand, I will take you to the house of that young man who lost his life at the border. You're a liar. All these BJP and BJP supporters are liars. आप मुझे बताइए पंकज जी, आप बताइए कि अगर हम राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट ला रहे हैं अपने युवाओं को जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती उनको हम पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो क्या ये गलत होगा? क्या अगर हम कह रहे हैं कि जो 30 लाख वैकेंसीज है, जो सैंक्शन पोस्ट है सरकारी विभागों में, हम 30 लाख पोस्टों को भरेंगे, तो क्या ये गलत है? अगर हम कह रहे हैं कि जो गिग इकोनॉमी में लोग काम कर रहे हैं हम उन्हें सुरक्षित करेंगे, तो क्या ये गलत है? अगर अब हम आ जाते हैं, आपने जो 2 सवाल पूछे पंकज जी, एक अलायंस पार्टनर्स के साथ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आज ये लड़ाई जो है ना, 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, और एक विचारधारा ऐसी है जो संविधान में विश्वास नहीं करती। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार 370 सीटों की बात कर रहे हैं। और देखिए बीच में बोलते हैं, इनको कुछ सिखाया विखाया नहीं है, बीच में बोल रहे हैं। भाई मैं तो बोलती नहीं किसी के भी बीच में। संविधान की बात कर रहे हैं, आपने तो जेल में डाल के अपने संविधान को बदल दिया था। किसी ने नहीं बदला, झूठा आदमी है, झूठे, शर्म नहीं आती? किसने संविधान बदला? संविधान के हिसाब से किया गया जो भी आज अघोषित आपातकाल है, यानी कि बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक समझ रखा है मोदी जी ने, मगर मोदी जी को अब बैग पैक करके ना झोला उठा के वापस भेजेगी देश की जनता। अब अपना काम करिए, बीच में मत बोलिए। जो जितना बौखलाता है वो उतना बीच में बोलता है। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आपको शर्म नहीं आती? बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं आप, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं है, क्योंकि जा रही है भाजपा। जो फायदा उठा रहे हैं ना आप लोग आजकल, वो फायदे खत्म होने वाले हैं, इसलिए। और सुनिए, आपने मुझसे कहा अलायंस में है हम, तो क्या हमें दिक्कत आएगी? आपने मुझसे ये सवाल किया पहला कि अलायंस में है तो क्या दिक्कत आएगी, और बहुत अच्छा सवाल है। आज जब 2 विचारधाराओं की लड़ाई है ना, तो उसमें एक विचारधारा ऐसी है जिसके नेता और प्रत्याशी पब्लिक में जाके कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 370 इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सके। ये इनके अपने भाजपा के प्रत्याशी। इसका जवाब दीजिए आप। 2 चीजें सुजाता जी ने उठाई है, बहुत ही प्रोमिनेंट है। पहला, आप जॉब को बस नजर दिखाते हैं और उसके बाद फिर देयर इज नो longevity to it. That's one accusation. The second one is Article 370 and how it can be misused, how Congress views it. Please उस पर जरा प्रकाश डालिए, और आप प्लीज अब समय लीजिए। सुजाता जी ने बहुत ही एक तरीके से पेशेंटली भी अपनी बात रखी है, and we hope that the rest of the panelists would also hear. Please, please. See, एक ही बात है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप जून 4 तारीख को आप एक डिबेट लगाइए यही चैनल पे, मैं आता हूं, तैयार हूं। एंड दिस पर्सन हु जस्ट सेड दैट कांग्रेस इज गोइंग टू विन द इलेक्शन, जरूर लेके आइए, हम डिबेट करेंगे। सीधी सी बात है, ये कहते हैं कि संविधान बीजेपी बदलेंगे। किसने संविधान बदला था? 104 बार कांग्रेस ने बदला था, 104 बार। इमरजेंसी के टाइम पे इन्होंने सोशलिस्ट कुछ भी अमेंडमेंट इन्होंने नहीं किया, अमेंडमेंट भाजपा की सरकार ने नहीं किया। क्या बोल रहे हैं ये?
पता वता कुछ है या नहीं है? इमरजेंसी जो है उसके लिए प्रावधान है, ठीक है। आज जैसे अघोषित आपातकाल है वैसा नहीं था कि आप बिना कानून के अघोषित आपातकाल रखिए, ईडी को, इनकम टैक्स को, सीबीआई को भेजे। हाँ, बस राहुल गांधी का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी इनको फंड नहीं मिलने देगी। इनके घर में इनकम टैक्स और ईडी सीबीआई भी चली जाएगी। आपने बात रखी है। सुरेश जी, आप प्लीज आप 1975 तक मत जाइए, बहुत सी चीजें निकलेंगी, बहुत सी चीजें निकलेंगी। मैं तो आगे आने को तैयार हूं, मैं कह रहा हूं। और मजेदार बात यह है कि हम समर्थन नहीं करते मगर आरएसएस समर्थन कर रही थी, शिवसेना के चीफ समर्थन कर रहे थे। हमने माफी मांगी है सदन में खड़े होके। फिर उसी बात पे आगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का फ्लैग क्यों नहीं निकाला वायनाड में 2 दिन पहले? क्या डर गए थे? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ राहुल गांधी ने रैली किया था। ये देखो, अगर भाजपा का कोई आ जाए तो वो पाकिस्तान, चीन नहीं बोलेगा, चीन का ये नहीं बोल पाएंगे मोदी जी। वो कहेंगे पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर नहीं बोलेंगे, वो तो बोलो मणिपुर का। क्यों नहीं निकलती मोदी जी की चीन पे? प्लीज, आपने अपनी बात रख ली है सुजाता जी, एंड वी अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस कंप्लीटली। आप सुरेश जी को जवाब देने दीजिए। I promise you, after saying sir, we will come to you 100%. Please take note of what Mr. Kochi. We will take one more round of please. Please. Yes, Mr. Suresh, please continue. No, it's a very simple fact of life. Arithmetic says it all. Mamata Banerjee was very clear in predicting that the Congress will not even get 40 seats. Look at what happened in Jammu and Kashmir. Even the small parties have walked away. National conference says we have nothing to do with India Alliance. Mufti, she says, I have nothing to do with India Alliance. Where is the alliance? Where is the alliance? Then, I mean, how do you counter what Mrs. Paul said? That यहाँ पर बात हुई जॉब्स की, जिसको उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक तरीके से ख्वाब दिखाती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती। और दूसरा आर्टिकल 370, मुझे लगता है जो सेंटिमेंटल वैल्यू आर्टिकल 370 के साथ है, बॉलीवुड ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू इट। What is it that you can, as of now, tell the viewers to clear the air around 370? What the Congress is accusing the BJP of? No, are you referring to the 370 seats or Article 370? I mean, Article 370, as far as the change. What is wrong with it? What is wrong with it? The Supreme Court said it was a temporary provision. Article 35A was an ordinance. Ordinance lapses in 6 months. It was continued for 75 years. Please understand this. I worked on the same thing. I know it, and that is the Supreme Court threw out the case because there's nothing. You prevented SC and STs from having reservations in Jammu and Kashmir. That is what you did. A girl marrying for somebody from outside Jammu and Kashmir would lose her property. Why is the Congress not speaking about all this? Today, what happened after Article 370 has gone? Have you seen stone throwing in Jammu and Kashmir? It used to be prevalent all through. There is no democracy there. There is no government there. Have some sense in what you are saying. 2019 to 2024, you haven't been able to have elections there. You haven't given them their government. You have not given them their statehood. In Ladakh, Sonam Wangchuk is protesting, and on 7th of April, he has said he will be leading a protest of 1 lakh people to the China boundary. सुरेश जी, ठीक है। सेन साहब हमारे साथ है। सेन साहब, इन चुनावों में जो भी बीजेपी का भी मैनिफेस्टो अभी आएगा, लेकिन अभी भी हम जो चुनावी रैलियां हो रही है, कैंपेन देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आज भी चुरू में जो है एक रैली की है, लेकिन ये 370, राम मंदिर, ये मुद्दे फिर आ रहे हैं। क्या इन कैंपेन्स के अंदर जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनकी बात होती आपको दिखेगी लोकसभा चुनाव में, या फिर एप्रीहेंशन वही है कि वो बाद में भावनात्मक मुद्दों पे, इमोशनल मुद्दों पे ये सारी चीजें चली जाए? यही तो आई वाज ट्राइंग टू एग्जैक्टली, मैं यही बोलना चाहता था पहले भी कि there are two sides to the manifesto. One are the practical sides, and the other is, I would put it, the emotional side. The practical sides, for instance, let us just take the Congress manifesto, because the BJP hasn't yet come out with the manifesto. You can examine it then. I think that in practical terms, the Congress has made a serious effort to address the young people of this country, and that is that Agnipath scheme, for instance,
From whatever little I have seen in my travels, particularly in North India, places like Himachal Pradesh, Rajasthan, there is a lot of anger against the Agnipath scheme because it was one of the sole means of livelihood for a lot of young people from these places. You know, the soldiers provided for, yes, and the Agnipath scheme is not a means of livelihood. It's an internship of some sort. The point remains is under the army regulations, when you were fully employed by the army as a soldier or whatever, your parents were covered health-wise, you were given free rations, you got a pension at the end of your service, whatever it is, that is gone. The Congress, by saying that they will go back to the old scheme, remove the Agnipath scheme, is directly appealing to young people in this country and the parents of the young people who have a military tradition. Then we look at the question of unemployment benefit. This is better than, this is not free food. This is unemployment benefit. In other words, if you're employed, you will not get unemployed benefit. If you are not employed, the government says, or the Congress says, they will provide you with 400 rupees per day. All right. Whether you buy food with that or whatever is your business. So these are schemes which are addressing to some extent unemployment, and particularly about unemployment among young people. The young people are being addressed this way. Then there is the whole question of a 1 lakh to be given per annum to people below a certain poverty line. These are practical terms. Whether they finally end up doing it, of course, as Mr. Suresh has said, they may not win the election. That's a separate issue. Should they win an election, and will they end up doing it? I don't know. But this is obvious. The intent for this is to just address the grassroots, the young people in the grassroots, the parents of young people in the grassroots. And of course, we know that the BJP appeals to a lot of women. And you saw the Madhya Pradesh election. The women vote there was very, very clearly in favor of the BJP, the last elections. And so they've now, the Congress is also again addressing the women. Not that the Congress didn't address women in the past. The point remains is I can see that there are young people being addressed and women being addressed by these promises. We will have to wait to see what the BJP offers in their own manifesto. Last round of questions, Sujata ji. I mean, we are almost approaching 6 o'clock as of now here, as far as the debate is concerned. Final a minute that you will have to contribute and say on this show. And I also want to add one thing. मैनिफेस्टो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों का, जनता तक पहुंचाएंगे कैसे? आप कहते हैं खाते फ्रीज कर दिए, पैसे है नहीं। देखिए, जब जिस ग्रुप को जिससे हम बात करके उनके सुझाव लेकर अपने मैनिफेस्टो को बनाते हैं, तो वो भी इंतजार कर रहे होते हैं कि उसमें क्या होगा। जैसा मैंने आपको सफाई कर्मचारियों का बताया था, उसी तरह से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी है, जो युवा है, जो श्रमिक है, जो रोजगार का इच्छुक है, जो अग्निपथ योजना के खिलाफ है, ये सभी लोग जो है आज जानना चाहते हैं कि हमारे लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हमारे लिए क्या लाएगी। और इसी कारण से हम जनता के बीच में इसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी आगे करेंगे और हम घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या है। प्लस जिन जो टारगेट ग्रुप से, देखिए वो इंतजार कर रहे हैं। मुझे आज फोन आए कि हमारे बारे में कुछ आया नहीं है, और मैं ये स्पेसिफिकली सफाई कर्मचारियों का इसीलिए आपको बार बार कह रही थी। तब मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पर देखिए सफाई कर्मचारी का, क्योंकि सफाई कर्मचारी के हेडिंग के अंदर नहीं है, मगर आप इस पेज पर देखिए। तो हो ये रहा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे जो सुझाव लिए थे उसी के को लेकर इसे बनाया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता के बीच में हमारा मैनिफेस्टो बहुत ही रेजोनेट भी करेगा। और अहंकार में तो किसी को जीना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। ये क्या अहंकार है कि हम जीतेंगे? हम तो कोई भी नहीं, हम तो जनता के सामने हैं, और जनता अगर हम पे विश्वास करेगी तो हम जीतेंगे। ये सिंपल सा फंडा है। क्रिकेट में जैसा कहते हैं, the match is not over till the last ball is bowled. Suresh ji, your turn. And yes, please, last 2 minutes. It's very simple. I told you, 190 seats, direct fight between Congress and BJP, 185 seats, BJP and regional parties. And go back to the statistics, 2009, 2014, 2019, what happened? This is literal wipeout of the Congress.
Not since Rajiv Gandhi won that. Pulwama happened in 2019. Pulwama happened 2019, and the Prime Minister asked for votes in the name of those who laid down their lives for the country, which was shameful. What has Satpal Malik ji said on Pulwama? Let's not forget it. Don't forget. In 2003, you were wiped out. And of course, you have forgotten Mr. Atal Bihari Vajpayee, because it is only one man that you are enslaved to today. But it is not about you who is going to decide who's going to win and lose. It is the people of this country who are going to decide. In 2018, we won Rajasthan, we won Chhattisgarh, we won Madhya Pradesh, and you brought down the government of Madhya Pradesh. You might have won in 2019 after that, but in 2023, even if we have lost these 3 states, we are going to win this Lok Sabha election. Make no mistake. Please, don't worry. सुरेश जी, एक मिनट आपके पास, उसके बाद लास्ट कमेंट हम सेन साहब से लेना चाहेंगे, प्लीज. Yes, Suresh, go on. So my point is very simple. So if I'm a guy who looks at statistics in the same laptop which I'm looking at addressing you, I have data with me. I challenge this Congress spokesperson for any debate. Let us have a 1-hour debate based on facts, not on fallacies. The same promises were made in Chhattisgarh, same promises were made in Rajasthan, same promises were made in Madhya Pradesh, and what happened? Wiped out. Literally wiped out. You have made people know what can be done. We all know how you have influenced elections, from where you've got your monies, and how you've treated people. And let's make no mistake, the BJP people have been thrown out. It is the Congress leaders who've been brought in, because you all are not capable, and that's why don't challenge me, Mr. Suresh, because if you were capable, you would have been in the official team of the BJP, and you are not. Don't show your arrogance all the time. This is the Charitra Chara of the BJP. Look at your leader. Look at your leader. The language he uses, Didi, oh Didi. Jersey guy. This is the language of your leader. This is the level to which he goes down. And you know your JP Nadda, what is it? Yeah, so is that a justification? It was wrong. It was wrong what he said. But you will justify, because Mr. Digvijay Singh said, that's why Mr. Modi will say, shameful, shameful. He has not said a word about the women of Manipur, about the wrestlers. But he will talk about Sandesh Khali because he wants to pull it aside. High Court has said about Sandesh Khali. That is what he is all about. I request both of you, please. Mr. Sen has been patient. I thought it was my opportunity, but I never got an opportunity. That's a sad fact. You speak in between everybody. Yeah. And then you'll say, I have no opportunity. Cry babies of the BJP. Victims. You cannot get more than 40 seats anyway. There the Prime Minister is crying all the time, and his spokespersons cry all the time, official and unofficial. Rahul Gandhi, you know what happened to him? Yeah, poor thing. Now he will not get his daily wages if he doesn't take the name of Rahul Gandhi. Can your leader walk 10,000 kilometers like my leader Rahul Gandhi? No. No. He has to change his clothes after every half a kilometer. And he will not even be able to walk 1 kilometer. And that too without cameras? Never. Never. Poor leader. अब नहीं, अब हम इस चीज पे आएंगे तो हम 1 घंटे और इसी चीज पे एक तू मैं करते रहेंगे. Please stop. Sense of last word from you. Now, what I began earlier, it's a simple thing, and there's a lot of confusion that has been going on over the last several years. And what are the alternate visions in this country? This is what the manifesto is supposed to provide. One vision, which is the BJP NDA, and the other vision, which is India Congress, whatever you call it. So are there two clearly separate visions? From whatever I can see, indeed, they are emerging in that fashion. And it's basically, I can only say that the Congress manifesto at the moment is showing a bottom-up vision, which is the social justice platform, which is the platform which the socialists in the Hindi belt in the good old days, the Lohiites and others, which the communists, which the Congress, let's be very clear. The Congress was the one that started social justice.
So the Congress manifesto, I'm not talking about the BJP because they have not produced their latest manifesto. The Congress manifesto is clearly showing a vision of social justice, of grassroots development, and they are not talking about large, big schemes at the moment. They're talking about how to make life more comfortable for those who are at the bottom of the pyramid here. Now, it is possible that the BJP will give you the alternative, which I don't know, which is the top of the pyramid. And there are two I'm not saying that the BJP is only going to support. The top of the pyramid is supposed to trickle down. And a lot of people have criticized this trickle-down theory, which has been going on for some time. And the other is the bottom-up. And the Congress manifesto is a bottom-up social justice manifesto. Right. Thank you. Sureshji, with a promise to you and to Sujata ji and to Sen Saab. June 4th, please have a debate. Let's have it with the same numbers. Yeah, the numbers. You're absolutely right. With a promise, as I was saying, and let me complete that. The day BJP comes up with a manifesto, with their manifesto, we will have the same panel. We will discuss the merits of that manifesto also. But as a courtesy and last, word from you, Sureshji, barring what Congress manifesto says, BJP, as it has projected, has achieved a lot, and that's what has been said also. What Sen Saab says that there is a trickle-down effect as far as BJP's way of functioning is concerned. If BJP issues its manifesto, what are the three things that, in your opinion, would be there, which would be different from what the BJP hasn't done so far? I think if you look at the most of the items of BJP manifesto 2019, they are ticked off. Last evening, I was looking at it. Most of it got ticked off. I think the only thing that was left behind was possibly the Uniform Civil Code. That was left over because that is a part that will have to come later. And it's not because BJP wants to bring it. It is because Supreme Court has said so many times that bring in a law, we are saddled with 40,000 cases. We don't know what to do with it. So UCC will be one big thing that will come up definitely. The second thing I suspect, because Modi ji is talking of 100 things in the first 1 month of or 1.5 months of rule of that 100 days that's going to be there. I think the big bang effect will be the economic reforms, because that is what BJP is going to do, because most of the political things are ticked off. The Ram Janmabhoomi, Ram Mandir got ticked off, everything got ticked off. So it is going to be the most important thing that is going to be there is that we're going to have more of social justice stuff. Because when we talk of 80 crore people being fed, I think I just need to correct Mr. Sen there. Remember what the United Nations said and what the WHO said, the number of Indian people pulled out of poverty line. The problem is in Telangana, where I stay, 4 crore people have white ration cards. White ration card, that is 4 crore people. That families will be 1 crore, for example, 1.5 crores. But the population of Telangana is only 3.5 crores. There are more people, so obviously there is a leakage in the system. Maybe the government wants to get rid of the FCI godowns, the rice that is there. Good idea. Why let the rats eat it? Let people eat it, and that I think is a good, sensible thing to do. Thank you. Point taken, sir. Sujata ma'am, I think you have some breaking news for us. I get the political drift of it. Before we close the show, I mean, again, yes. We are going in the reverse circle now. Please. Yes, the country has realized in the last 10 years that, like in the Rameshwaram cafe blast that happened in Bangalore, it is a BJP worker who has been taken into custody by the NIA. Yes. This is from another news channel. No, just stop defending. This is what the BJP's character is. People have recognized that whenever you want to spread hatred, the BJP workers are all there. The BJP MP comes to know beforehand what is going to happen in a cafe, and that is why the people are going to throw you out. People are going to vote against your hatred, your hate politics. This is what the country is going to do. We will check that Jhola. The Jhola man will not be able to escape with the Jhola. Remember that. सुरेश जी के पास बहुत सारा डाटा है. अभी ILO की रिपोर्ट भी आई है. उसमें खुद जयशंकर साहब मौजूद थे. क्या उसमें आया? वो सब कुछ डाटा है. वो कभी बाद में चर्चा करेंगे. लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया सुजाता जी आपका, सुरेश जी आपका, Sen Saab आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you so much, gentlemen, and Sujata ma'am, for joining us, sharing your views. The emotions are high. We understand totally, but the only thing is to make ourselves heard. We need to speak in turn when our turn comes. But thank you so much. Thank you so much for joining Oneindia. Thank you.